इंग्लिश लैंग्वेज भी बाकी अदर लैंग्वेजेस जैसी है। अगर इसे अच्छे से सीखना है तो आपको 4 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होगा। स्पीकिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है और राइटिंग है। रीडिंग का हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है? अगर आप सही तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि आप लोगों का ग्रामर सही होगा। ग्रामर कैसे सही होगा? मान लो आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं ही वॉज गोइंग, ही वॉज सेइंग, ही वॉज कमिंग, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाता है कि ही के साथ वॉज आएगा, वेयर नहीं आएगा। रीडिंग से हमारी स्पेलिंग्स जो है तो सही होती हैं। बार बार हम लोग वर्ड्स देखते हैं और उनकी स्पेलिंग हमारे ध्यान में आती है कि किस वर्ड की क्या स्पेलिंग है। अच्छी रीडिंग करने से, सही रीडिंग करने से क्या होता है, हम लोगों के प्रोनाउंसिएशंस ठीक होते हैं। और इन सबसे बढ़कर ये बेनिफिट मिलता है कि आप किसी के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके जहन में वर्ड्स आते हैं, क्योंकि उन वर्ड्स को आपने ऑलरेडी रीडिंग में पढ़ रखा है, बोल रखा है। ठीक है, तो रीडिंग का क्या बेनिफिट है? कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग एक स्टोरी की रीडिंग करने जा रहे हैं। स्टोरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है। हम लोग रीडिंग के साथ साथ कुछ इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे। ग्रामर से जुड़ी हो, वर्ड से जुड़ी हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हो, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं। स्वागत है आप लोगों का JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर है एक्चुअली ये पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है? हम लोगों ने हमारे चैनल पर जो JEFY फ्री स्पीकिंग इंग्लिश क्लास स्टार्ट की है उसका ये पार्ट है। लेक्चर नंबर 10 है। अगर इससे पहले लेक्चर्स आप लोग नहीं देख पाए हैं और आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी। क्या नाम है प्लेलिस्ट का? प्लेलिस्ट का नाम है JEFY फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। ये नाम से आप लोगों को बाकी लेक्चर्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। आज की स्टोरी से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री यानी एक ऐसी स्टोरी जिसमें हमें ये पता नहीं होता कि इसका एंड क्या होगा या आगे जो हमारे इंसिडेंट्स होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे। एक थ्रिलर स्टोरी है, सिर्फ इतना कह सकता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। याद रखें, इसे डे नहीं कहना है, थोड़ा सा ई पर ख़त्म करेंगे आप लोग। डे, डे, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was अब यहाँ पर देखिए eyes के साथ was कैसे लगा है, क्योंकि प्लूरल के साथ तो हम लोग were लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में eyes के साथ नहीं है, ये है power के लिए, है ना। The power of his eyes was, तो ये जो was है ये किसके साथ में है? power के। ओके, considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा हूँ the effect, क्योंकि effect E से शुरू हुआ है और E एक vowel है ना। A, E, I, O, U ये vowels हैं, तो वावल साउंड के पहले इसे दी पढ़ेंगे, है ना। ये या वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इफेक्ट, तो हम लोग इससे THE को दी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई वर्ड होता जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता तो हम इसे द पढ़ते, जैसे द माउस, है ना। लेकिन यहाँ पर इफेक्ट एक वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे द नहीं पढ़ सकते, इसे पढ़ना होगा दी। द इफेक्ट ही वुंड a saffron colored
turban around his head. ऐसे वर्ड जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के तीन तरीके हैं। एक तो ये जैसे लिखा है ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, दोनों वर्ड्स के बीच में छोटा सा हाइफन देकर, या आप उन्हें मिला करके लिख सकते हैं जैसे ग्रैंडफादर, या आप स्पेस देकर के लिख सकते हैं। ओके, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, पीपल वर। ये देखिए, इसे स्टूडेंट लोग जो है ख़ास तौर से वो वेयर पढ़ते हैं। वेयर ने ये कैसे पढ़ना है इसे, वर, पीपल वर attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down. A surging crowd कहा हूँ मैंने, है ना। अब कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर जी ये ए है या अ है। तो जब आप इसे सेंटेंसेस में पढ़ेंगे तो इसे अ पढ़ना है आप लोगों ने, लेकिन जब ये ए बी सी डी के साथ लिखा हुआ है तब हम ये तो नहीं कह सकते ये अ ब सी डी लिखी हुई है। वहाँ पर तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये ए बी सी डी है ना। एक और बात है, इसे ए कब पढ़ते हैं, जब आपको स्ट्रेस देकर कहना हो, अपनी बात जोर देकर कहनी हो। जैसे आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मैंने एक चीता देखा, और वो कह रहा है कि जाओ तुमने नहीं देखा, तो आप अपनी बात को जोर देकर के कहोगे आई सॉ ए चीता। ओके, यहाँ पर ए को आपने ए कहा है क्योंकि आप स्ट्रेस देकर कह रहे हो। ओके, a surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represent री नहीं है ये, रे पढ़ना है आपने, represented all along its way. Medicine sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all day to attract the whole town. देखिए यहाँ पर मैंने the whole कहा हूँ क्योंकि जो साउंड है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, whole का कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे द पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट to him in, अब इसे क्या पढ़ना है, vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next Delhi almond. ये देखिए, इसे एल दिखता है तो स्टूडेंट लोग इसे आलमंड या एलमंड इस तरह से पढ़ते हैं, जबकि ये एल साइलेंट है। ओके, साइलेंट किसे कहते हैं हम लोग, ऐसा लेटर जो लिखा तो जाता है लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं है। ओके, Delhi almond and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. देखिए मैंने the astrologer कहा क्योंकि astrologer एक vowel sound से start हुआ। I hope कि ये concept आप लोग अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. One or two had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. It was a, अब देखिए ये थोड़ा सा confusing word है, कैसे पढ़ेंगे आप लोग इसे, bewildering, crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life,
and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. अब देखिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, एज आया है यहाँ पर, है ना, एज, तो ये वाले कंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे आप लोग? इसे कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव में एज का यूज होता है। Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral, कैसे पढ़ेंगे आप इसे, ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, and if an ocean, कैसे पढ़ेंगे आप इसे? अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं ओ शी अन, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ocean flowed between. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. Oh, he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn? Where he is, you have an, अब इसे कैसे पढ़ेंगे? impetuous, impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and, अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, थोड़ा ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन सुने, paraphernalia, and was putting them back into his bag. When the green shaft of light was blotted out, he looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you a good to sit down for a while and chat with me." The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light,
Yours is a nature. Oh, stop that, the other said. Tell me something worthwhile. Our friend felt piqued. कैसे पढ़ना है इसे? ये देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डी पर ख़त्म हो रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पर हमारा जो वर्ड है ड इस साउंड पर एंड नहीं होगा, हमें अपने वर्ड को एंड करना पड़ेगा ट पर, क्योंकि ये सही प्रोनाउंसिएशन होगी. ओके, picked, picked. I charge only 3 pies per question, and what you get ought to be good enough for your money. At this the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. If you find my answers satisfactory, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 annas? All right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a. अब इसे कैसे पढ़ना है? Shrewd, shrewd. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there breathlessly. The astrologer felt very uncomfortable. देखिए ये comfortable नहीं है, टेबल तो है ही नहीं है, ठीक है? कैसे पढ़ना है फिर आपने इसे? Comfortable, comfortable. Here, take your anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist. यहाँ पर wrist का मतलब होगा कलाई, ठीक है? किसी वर्ड में W के बाद अगर R ये लेटर आता हो तो W को साइलेंट पढ़ेंगे हम लोग. जैसे इसे वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, इसे रिस्ट पढ़ेंगे, या रेसलर या राइट. ओके, एंड सेड, You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, Challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. Stop, said the other. I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you go till you discharge all your coins. The astrologer muttered a few incantations and replied, All right, I will speak. But will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, You were left for dead. Am I right? Ah, tell me more. A knife has passed through you once, said the astrologer. अब यहाँ पर देखिए इसे कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि के से अगर कोई लेटर कोई वर्ड स्टार्ट होता है और उसके बाद एन आता है तो के को हम लोग साइलेंट पढ़ते हैं. जैसे ये वर्ड के एन से स्टार्ट हुआ तो इसे नाइफ पढ़ेंगे, या फिर दूसरी एग्जांपल है के एन डबल ई नी, नी यानी घुटना, या अगली वाली एग्जांपल है के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई नॉलेज, नॉलेज यानी इल्म. ओके, गुड फेलो. He bared his chest to show the scar. What else? And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other,
overwhelmed by enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far-off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. Guru Nayak, you know my name? The other said, taken aback. As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100. Why should I leave home again? The other said reflectively, I was only going away now and then to look for him and to chalk out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. अब यहाँ पर देखिए, इसे साइलेंस नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, ले नहीं है ये, कैसे पढ़ना है इसे? साइलेंस, साइलेंस. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, count them. One man gave all that, 12.5 annas. She said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? Nothing. After dinner, sitting on the pail, he told her, do you know a great load is gone from me today? I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here, and married you. He is alive. She gasped. You tried to kill him? Yes, in our village, when I was a silly youngster, we drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning, and stretched himself on the pillow. This amazing story has been written by R.K. Narayan. So that's it. So friends, हम लोग पढ़ रहे थे एक अमेजिंग स्टोरी द एस्ट्रोलॉजर्स डे. हम लोगों ने देखा किस तरह से सिस्टमेटिक रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, ऐसी रीडिंग जिससे आप लोगों के प्रोनाउंसिएशंस, ग्रामर, आप लोगों की स्पीच इंप्रूव हो, उसमें सुधार आ सके. ओके, चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें. मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट लेक्चर में. So until the next time, thank you for being with us here at JEFY Javits English for You.